Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Brajajanarandana Yashodanandana Brajajanarandana Jamuna Tira Vanamsari Jamuna Tira Vanamsari Jaya Radha Madhava Kund Bihari Jaya Radha Madhava Kund Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Brajajanarandana Yashodanandana Brajajanarandana Jamuna Tira Vanamsari Jamuna Tira Vanamsari Jaya Radha Madhava Kund Bihari Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe
Jai Vishnupada Paramahamsa Parivrajaka Stotra Satta Sri Simad His Divine Grace Hilabai Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki ISKCON BBT Founder Acharyas Divine Grace Srila Prabhupada Ki Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Samavata Bhakta Vrinda Ki Harinam Sankirtan Ki Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Janitai Gauda Premanandi. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru to Sri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Om Ajnanatimirandasya Gyananjana Salakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamalam Sri Gurun Vaisnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tvam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakanvitam Scha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kansana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhyaeva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Narayanam Namaskritya Dharam Shaiva Narotamam Devim Sarasatim Vyasam Before reciting the Srimad Bhagavatam, which is the very means of conquest, let us first offer our respectful obeisances unto Narayana, the Supreme Personality of Godhead, unto Narayana Rishi, the supremmost human being, unto Mother Saraswati, the goddess of learning, and unto Srila Vyasadeva, the author. Nasta prayasabhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamashloke Bhaktir Bhavati Naistiki. By regularly hearing the Srimad Bhagavatam and by rendering service unto the pure devotee, all that is troublesome within our heart becomes destroyed practically to nil, and loving devotional service unto the Supreme Lord, who is praised with transcendental songs, becomes established as an irrevocable fact. Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahma Samhitam Uttama Shloka Charitam Chakara Bhagavan Rishi Nishreyasaya Lokasya Dhanyam Swasya Namaha. This Srimad Bhagavatam, known as the Grantaraj, the king of all Vedic literatures, is the literary incarnation of God. It is compiled by the incarnation of God, Srila Vyasadeva. It is meant for the ultimate good of all people. It is all successful, all blissful,
and all perfect. Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhar, Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Surabhyaya Namaha. Om Surabhyaya Namaha. Om Surabhyaya Namaha. Mukham karoti vasalam pangum langayate girim yat kripatamaham bande Sri Gurum Dinataranam. Yat kripatamaham bande Sri Gurum Dinataranam. Hare Krishna. Hare Krishna. Welcome to our daily Srimad Bhagavatam class, continuing from Canto number 1, chapter 4, which is entitled The Appearance of Sri Narada, and today's text is number 6. Yes. Katham alakshitaha porai sampraptaha kuru jangalan unmata mukha jadavad vicharan gaja sabayi katham alakshita porai katham alakshita porai samprapta kuru jangalan unmata mukha jadavad vicharan gaja sabaye katham alakshita paurai samprapta kuru jangalan unnata mukha jadavad vicharan gaja sabaye. Katham alakshita porai samprapta kuru jangalam unmata mukha jadavad vicharan gaja sabaye. Katham alakshita paurehe sampraptaha kuru jangalam utmata mukha jadavad vicharan gaja sabaye. Katham lakshitaha pare sampraptaha kuru jangalam unmukta mukha jadvat unnata mukha jadavad vicharan gaja sabaye. Gurukula.
कथचं लक्षिता पौरे कथम लक्षिता पौरे संप्रप्ता कुरु जंगला संप्रप्ता कुरु जंगलं मता मुख उन्मत मुक्क जदबद द्विचरणं गज सावै विचरन् गज सावये अरेक्जन कथमलक्षितो पौरे कथम लक्षिता पौरे संप्रादेत करजंगले संप्रप्ता कुरु जंगलं संप्राद कुरु जंगलम संप्रप्ता कुरु जंगलं उन्मुख जड़ उन्मत्त मुख जड़वत उन्मुक्त मुख जड़वत उन्मत्त मुक्क जदबद विचरण गज सावहे विचरन् गज सावये कथम how कैसे how are you आप कैसे हो ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ alakshitah recognized मान्य ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು porai by the citizens नागरिकों द्वारा ಪುರವಾಸಿಗಳಿಂದ sampraptah reaching पहुँचे ತಲುಪಿದಾಗ kuru jangalan the Kuru Jangala provinces कुरु जंगल प्रदेश में ಕುರು ಜಾಂಗಲ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳನ್ನು unmata mad pagal पागल ಹುಚ್ಚ uchcha ಹುಚ್ಚ utsa ನೋ ಹುಚ್ಚ ಹೂ oh who ಹುಚ್ಚ utsa mad eh? ಪಾಗಲ್ ಪಾಗಲ್ In Indonesia they go like this something fractured up there muka not muka muka dumb गूंगा ಮೂಕ Jadavat stunted मूढ़ के समान ಜಡರಂತೆ vicharan wandering घूमते हुए ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವ Gajasavaye Hastinapur हस्तिनापुर में ಹಸ್ತಿನಾಪುರದಲ್ಲಿ Hastinapur Delhi ಹಸ್ತಿನಾಪುರದಲ್ಲಿ हस्तिनापुरದಲ್ಲಿ Delhi लास्ट में दिल्ली नॉट दिल्ली Hastinapur means Delhi. Yeah. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki. How was he, Srila Shukadeva Goswami, the son of Vyasa, recognized by the citizens when he returned to the city of Hastinapura, now Delhi, after wandering in the provinces of Kuru and Jangala, appearing like a madman, dumb and retarded? How was he? Srila Shukadeva, the son of Vyasa,
recognized by the citizens when he entered the city of his Hastinapur, now Delhi, now New Delhi. After wandering in the provinces of Kuru and Jangala, appearing like a madman, dumb, and retarded. कुरु तथा जंगल प्रदेशों में पागल, गूंगे तथा मोड़ की भांति घूमने के बाद जब वे व्यासपुत्र श्रील सुखदेव गोस्वामी हस्तिनापुर अब दिल्ली नगर में प्रविष्ट हुए तो वहां के नागरिकों ने उन्हें कैसे पहचाना? ಸುಖಮುನಿಗಳು ಹುಚ್ಚರಂತೆ ಮೂಕರಂತೆ ಹಾಗೂ ಮನೋವಿಕಲರಂತೆ ಕುರು ಮತ್ತು ಜಾಂಗಲ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡಿದರು. ಆ ನಂತರ ಅವರು ಹಸ್ತಿನಾಪುರವನ್ನು ಈಗಿನ ದೆಹಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಆಗ ಪುರಜನರು ಅವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡರು? Okay. Purport. The present city of Delhi was formerly known as Hastinapur because it was first established by King Hasti. आधुनिक दिल्ली नगर पहले हस्तिनापुर कहलाता था क्योंकि इसकी स्थापना पहल राजा हस्ती ने की थी. ಈಗಿನ ದೆಹಲಿಯನ್ನು ಮೊದಲು ಹಸ್ತಿನಾಪುರವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಹಸ್ತಿ ಎಂಬ ರಾಜನಿಂದ ಮೊದಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. So why is the city, or why was the city of Hastinapura called Hastinapur? I will ask. Yes. तो अभी हमने जैसे बताया आप लोग को हिंदी में कि क्यों हस्तिनापुर नाम मिला, आप लोग ने ध्यान से सुना? There are two reasons. हाँ, दो कारण हैं. Translation. ಹಸ್ತಿನಾಪುರ ಅಂತ ದಿಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಿನಾಪುರ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೆಸರು ಬಂತು? ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕಾರಣ ಇದೆ ಅಂತ. हाथ उठा. किसको पता? हाथ उठा. You can only, if you know both reasons, don't tell both reasons. Tell only one. हाथ उठा आप लोग. किसको पता? Raise your hand. राजा का नाम था. Yeah. So he is telling that it was kept on the name of a king named Hasti. Yes. एक और कारण है उसका पीछे. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ ಅದರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ. Okay? Yeah. And the second reason? दूसरा कारण किसी को पता है? ಎರಡನೇ ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? Teacher is cheating. Yes, second reason is because it was the Pura of the Hasti. Means in a kingdom, or rather in a palace, kings used to have one main place. Palace. Huh? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. Yes. And they used to keep many elephants. Why they used to keep many elephants? तो वो जो स्थान था वहाँ पर बहुत सारे हाथी रखे जाते थे. और फिर से एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि उस राज्य में एक स्थान था जहाँ पर हाथी रखे जाते थे, तो राज्य में हाथी किस लिए रखे जाते थे आप लोगों को पता है? ಹಸ್ತಿನಾಪುರ ಅಂತ ಹೆಸರಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆನೆಗಳನ್ನು ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಮಾಡೋ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಹಸ್ತಿನಾಪುರದಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ. What would you do if somebody gave you an elephant? अगर आप लोग को कोई एक हाथी दे दे उपहार में तो आप लोग क्या करोगे हाथी? ಹಾಗೆ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಆನೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯ? Huh? So some of them are telling like we'll sit on him. Some are telling like we'll give him service, take care of him, and he is telling that I will take him home my home. Your mother might have some other thoughts. Mother will tell go even you this hathi also. If somebody ever offers you an elephant, don't accept the elephant. तो महाराज उत्तर दे रहे हैं, बात बता रहे हैं कि कभी भी आपको कोई हाथी तोहफे में दे तो आप उसको मत लीजिए.
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಆನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ರೆ ನೀವು ಆನೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Unless you are a king like Yudhishthira Maharaj. जब तक आप बहुत बड़े राजा लाइक जिसके युधिष्ठिर महाराज जैसे राजा नहीं है तब तक हाथी आप मत शिकार कीजिए. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಆನೆಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಡಿ. So in the olden days, the kings, they used to keep many elephants because they are very useful. At that time they were very useful to carry heavy loads. They would be useful for construction, and sometimes they would use when fighting in some war. तो उस समय पर राजा लोग बहुत सारे हाथी पालते थे क्योंकि उस समय उनको वो उपयोग में लेते थे, कभी बहुत भारी भारी सामान ढोने के लिए, कभी ऐसा बड़ा बड़ा मंदिर बनवाने में, और कभी कभी युद्ध में भी उनको प्रयोग किया. Yes. ಮೊದಲಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳನ್ನು ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆವಾಗ ಆನೆಗಳಿಂದ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಗಳು ಕಟ್ಟೋದು, ಅರಮನೆ ಕಟ್ಟೋದು, ಮತ್ತು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಾಗ ಆಯುಧಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. So in Sridham Mayapur, how many elephants they have? महाराज एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि मायापुर में कितने हाथी हैं, आप लोग देखे हो क्या? Who went to Mayapur? मायापुर में कौन कौन गया? They Now you can Kannada also. ಮಾಯಾಪುರಿಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ರಿ? ಮಾಯಾಪುರ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. okay, down, hand down. How many down? नीचे कर लो. Niche. Yeah. How many saw 2 elephants in Mayapur? कौन कौन मायापुर में दो दो हाथी देखा है? हाथ उठाओ केवल, बोलो 4 मत. बार रखे. Char bar. नहीं करना है, बोलना नहीं है. Okay, they saw 2 elephants. So, what do they use the elephants in Mayapur for? आप लोग को पता है कि मायापुर में हाथी किस लिए प्रयोग, क्या क्या करते हैं हाथी से? वो बोलना नहीं, हाथ उठाना है. आप बोलिए. ಮಾಯಾಪುರದಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳಿಂದ ಯಾವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು? अब बताओ किस लिए रखे हैं, वो क्या करते हैं हाथी से, बताओ. He's telling that the Rath, chariot. Chariot, yes. They have every week, I think every Saturday, Every Saturday Nagar Sankirtan. Nagar Sankirtan with the elephants. The elephants they like very much. Okay. So we continue here in the purport. Goswami Shukadeva, after leaving his paternal home, was roaming like a madman, and therefore it was very difficult for the citizens to recognize him in his exalted position. तो सुखदेव गोस्वामी अपने राज्य से वापस आकर के जब वहाँ पर घूम रहे थे हस्तिनापुर में, तो वहाँ के जो निवासीगण थे वो उनको देख करके आश्चर्यजनक अवस्था में जा रहे थे. ಸುಖಮುನಿಗಳು ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹುಚ್ಚರಂತೆ ಅಲದಾಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಪುರಜನರು ಅವರನ್ನು ಅವರ ಉನ್ಮತ್ತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. A sage is not therefore recognized by sight. This is a very important sentence here. A sage is not therefore recognized by sight, but by hearing. अतः मुनि को कभी भी कैसा दिखता है वो देख करके ना पहचाना जाए, बल्कि उनसे सुन करके उनको पहचाना जाए. ನಿಜವಾದ ಮುನಿಯನ್ನು ಆತನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಗುರುತಿಸಬೇಕೇ ಹೊರತು ಬಾಹ್ಯ ವೇಷವನ್ನು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲ. One should approach a sadhu or great sage not to see but to hear him. मनुष्य को चाहिए कि साधु या मुनि के पास ना दर्शन के लिए ना जाए, उनके दर्शन के लिए ना जाए, बल्कि उनसे सुनने के लिए जाए, उनसे कथा सुनने के लिए जाए. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮುನಿಗಳ ಅಥವಾ ಸಾಧುಗಳ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ನಾವು ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕೇ ಹೊರತು ಅವರನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕಲ್ಲ. If one is not prepared to hear the words of a sadhu,
there is no profit. तो यदि वह साधु के वचनों को सुनने के लिए तैयार ना हो तो जाने से कोई लाभ नहीं है. ಸಾಧುಗಳ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ಸಿದ್ಧವಿಲ್ಲದವನು ಅವರಿಂದ ಯಾವ ಲಾಭವನ್ನೂ ಪಡೆಯಲಾರ. So when we go to Mayapur and when we go to Vrindavan or similar holy places, what is the most important activity that we should do when we go to these places? तो जब हम मायापुर या हमारा जो भी कोई धाम है भारत में वहाँ जाते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है जो हमें करना चाहिए, आप लोगों को पता है? ನಾವು ಮಾಯಾಪುರ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಏನು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ? Take Krishna Prasadam. बोलो. भगवान का दर्शन चाहिए. Darshan, Bhagavan. ही इज टेलिंग, हाथ उठा के बताना. तो पहले जब पूछा जाए तब ही इज टेलिंग लाइक भागवत, वी शुड हियर भागवत. Okay. एंड दर्शन इज टेलिंग. Darshan. Okay. Yes. Of course we should take darshan. और महाराज थोड़ी देर पहले बोले थे कि प्रसाद भी We should also take prasadam. But here what is especially emphasized, we go to holy places, we should search out some sadhu. We should hear transcendental subjects. तो जब भी हम लोग जाएं ऐसे तीर्थ स्थान पर तो हमें साधु ढूंढने चाहिए और उनसे सुनना चाहिए ऐसा भगवान के बारे में. ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವರಿಂದ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. So it mentions Shukadeva Goswami was a sadhu who could speak on the transcendental activities of the Lord. सुखदेव गोस्वामी साधु थे और वे भगवान की दिव्य लीलाओं के विषय में प्रवचन कर सकते थे. ಸುಖಮುನಿಗಳು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಧುಗಳಾಗಿದ್ದು ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದರು. Actually, that is a sign of a sadhu. One of many signs of a sadhu. He is very pleased. He is very happy when he hears questions about spiritual topics. तो जो एक साधु होता है वो वास्तव में बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है जब उससे कोई आध्यात्मिक प्रगति के लिए वार्ता करता है, बात करता है. ಸಾಧುಗಳು ಯಾವಾಗ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಪಡ್ತಾರೆ. And the other characteristic is that he becomes very disinterested in speaking about mundane subject matters. और एक बात और ये है कि वह भौतिक चीज़ों में, सांसारिक चीज़ों के बारे में बोलने में वो निरुत्साहित रहते हैं, वो कभी नहीं बात करते हैं इन सब चीज़ों का. ಸಾಧುಗಳಾದವರು ಯಾವತ್ತೂ ಈ ಸಂಸಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. So here it is explained that Shukadeva Goswami, after leaving home, was wandering in different provinces but not speaking because he had not found anyone eager or interested to hear subject matters, and because he was not taking care of his body, had long hair, he appeared like a madman. He appeared like we say actually he was avadut like Jarbarat. Yeah. तो जो लोग देखते हैं वो सामान्य नहीं थे, जैसे सामान्य लोगों के जैसे, वो एक अवधूत थे. वो उनका बाल बड़ा हुआ था, पूरा शरीर का कुछ उनको ख्याल ही नहीं था, वो शरीर के स्तर से ऊपर थे और उनको अवधूत के रूप में थे. Yes. ಸುಖದೇವ ಗೋಸ್ವಾಮಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಕುದುರೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು,
ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರನ್ನು ಕಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು. But we don't allow any avadut in our Gurukula. महाराज बोल रहे हैं कि हमारे गुरुकुल में कोई भी अवधूत का भेष ना धारण करो. ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅವಧೂತರಾಗ ಆಗಬಾರ್ದು. Yes. Real avaduts. Who is another avadut in the pastimes of Lord Chaitanya Mahaprabhu? अब एक और प्रश्न है आप लोग के लिए कि चैतन्य महाप्रभु के लीला में कौन एक अवधूत हैं, किनको अवधूत नाम है. एक और पार्षद Very, very famous बहुत personality. ही वो उनका नाम है, उनकी ख्याति है. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು हाथ उठा के बोलिएगा, हाथ उठा करके. ಯಾರು? किसको पता है? अभी उनके बारे में हम लोग लीला भी किए थे. You must know who your avaduts are. और लीला में वो बना था. Ah. Huh? Your hand is not up. Cannot हाथ उठाओ speak. पहले. First hand up is back. महाराज जिसको बोलेंगे. Rahul. नित्यानंद महाप्रभु. Nityananda Mahaprabhu ki. Yes, he is avadut. नित्यानंद प्रभु भी अवधूत है. ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕೂಡ ಅವರೊಂದು ಅವಧೂತರಿದ್ದಂತೆ. So, in a similar way, Shukadeva Goswami was traveling around, not caring for others, not caring rather for his dress. And here it mentions that he did not satisfy the whims of ordinary citizens. Ordinary citizens means ordinary people who are simply asking mundane questions. तो सुखदेव गोस्वामी शरीर के स्तर पे नहीं थे. वो पूरी तरह से एक बड़े बड़े बाल, पूरा शरीर गंदा, और वो भौतिक चीज़ों के बारे में बिल्कुल कुछ भी सोचते नहीं थे और भौतिक चीज़ों के बारे में किसी से बात भी नहीं करते थे. ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. What do most people ask when they meet some sadhu? तो सामान्यतः लोग साधु के पास जा कर के क्या मांगते हैं, आप लोग को पता है? ಯಾರಾದರೂ ಸಾಧುಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? हाथ उठा के बोलो. हाथ ऊपर करो जिसको मालूम है वो. साधु के पास कोई आदमी जाता है तो क्या मांगता है? हाँ, आशीर्वाद. 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 किस चीज़ का आशीर्वाद? Example? क्या चीज़ का आशीर्वाद मांगता है? हाँ? क्या चीज़ का? हम भगवान का भक्ति कर रहे, आप माला कर रहे तो पैसा. महाराज पूछ रहे हैं पैसा मांगता है क्या? नहीं. हाँ कर He is telling like they ask for bhakti, that he can get some bhakti, spiritual advancement in devotional services. And most people don't ask for that. So he mentioned that they also ask for money. There is one very nice story I will tell you. One time Prabhupada was traveling in a train. You know the story? Prabhupada was traveling with a few of his sannyasis Yes, his disciples. and the disciples in the train. And he told the devotees, they know that whenever there is one sannyasi, ordinary people, they want to have darshan for Ashirvad. तो एक बहुत अच्छा कथा है. प्रभुपाद जी एक बार ट्रेन में, रेलगाड़ी में सफ़र कर रहे थे अपने सभी सन्यासी शिष्यों के साथ. ಪ್ರಭುಪಾದರು ಒಮ್ಮೆ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. And the sannyasis were telling, okay, we should arrange so Prabhupada is not disturbed, so we will be guarding his door. He had one private compartment. And then they were guarding, but one of the devotees guarding, he kind of became absent-minded, and all of a sudden, two visitors, two Indian people,
were offering their obeisances to Prabhupada in the compartment. तो जो सन्यासी शिष्यगण थे वो लोग सोचे कि प्रभुपाद को हम लोग अच्छे से सेवा करेंगे और उनको एक अकेला एक ट्रेन में एक ऐसा भाग होता है जिसमें अकेले रहने का भी एक होता है, तो उसमें रह रहे थे प्रभुपाद जी और बाहर से वो लोग गार्डिंग कर रहे थे, बाहर खड़े थे, लेकिन वो अचानक से कहीं गए और एक आदमी अंदर घुस के दंडवत प्रणाम कर रहा था प्रभुपाद जी को। ಪ್ರಭುಪಾದರ ಶಿಷ್ಯರು ಪ್ರಭುಪಾದರನ್ನು ತುಂಬ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ಕೋಚಿನಲ್ಲಿ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಬ್ಬರು ಭಾರತದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಡನ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ದಂಡವತ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So the devotees were not very good guards. Anyways, two people came inside, they offered their obeisances, and then Prabhupada asked them, yes, what can I do for you? तो जो वो लोग थे वो लोग अंदर चले गए थे और उन्होंने प्रणाम किया, तो प्रभुपाद जी पूछे उनसे कि हाँ बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ. ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಅವರು ದಂಡವತ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭುಪಾದರವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹೇಳಿ ನನ್ನಿಂದ ಏನಾಗಬೇಕು. So the first person, he folded his hands and he said, Swamiji, we just want your blessings, your ashirvad. What ashirvad you want? So that first person, he says, actually, my grown-up son, he cannot get job. Please bless him so he can get job. तो वो लोग अंदर दंडवत प्रणाम किया प्रभुपाद जी को और तो प्रभुपाद जी ने बोले बताइए मैं क्या कर सकता हूँ. तो उन्होंने बोला, वो व्यक्ति ने बोला कि मेरा एक बेटा है, उसका नौकरी नहीं लग रहा है, तो कृपया करके कुछ तो कीजिए कि उसका नौकरी लग जाए. ಪ್ರಭುಪಾದರ ಹತ್ರ ಪ್ರಥಮ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ನೀವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Then the second person, he said, Swamiji, my daughter, she is of marrying age now, but I cannot find a good husband. Please help me. Please bless her and bless me so I can find a good husband. तो दूसरा जो आदमी था वो बोला कि स्वामी जी मेरी एक बेटी है, उसका शादी नहीं हो रहा है, उसके लिए लड़का नहीं मिल रहा है, तो कृपया करके उसके ऊपर आशीर्वाद कीजिए कि उसको एक अच्छा लड़का मिल जाए. ಎರಡನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಮಗಳು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ, ಅವನಿಗೆ ವರ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆ ವರ ಸಿಗುವ ಹಾಗ ನೀವು ಕೃಪೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. After hearing these two questions from these two gentlemen, Prabhupada was sitting on his bench in the train, and then he called a few of his sannyasi disciples close by, and he told them what they were asking, and then he said, my blessings to you, to both of you, is that you should become like these sannyasi disciples of mine. You should leave family life and become tyagis, sannyasis. तो प्रभुपाद जी जो कि कोच ट्रेन के कोच में अपना सीट पे बैठे हुए थे, तो उन्होंने बुलाया अपने दो सन्यासी शिष्यों को और बोला कि देखिए मेरे आशीर्वाद ये सन्यासी हैं, आप लोग, मैं यही आशीर्वाद देता हूँ आप लोग को कि आप लोग भी यह सन्यासी बन जाइए, अपना घर परिवार छोड़ दीजिए. ಆ ನಂತರ ಪ್ರಭುಪಾದರು ತಮ್ಮ ಸನ್ಯಾಸಿ ಶಿಷ್ಯಗಳನ್ನು ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ನಾನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಆಗ್ತೀರಿ, ನೀವು ಹೀಗೆ ಆಗೋದಾದರೆ ನಾನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. They were not interested in hearing that kind of ashirvad, so immediately they said, excuse me, we have something to do now. Immediately they left. तो वो लोग जैसे ही सुने कि इस तरह का आशीर्वाद दे रहे हैं स्वामी जी, तो वो लोग बोले स्वामी जी मेरा थोड़ा कुछ तो काम याद आ गया, मैं जा रहा हूँ. ಈ ಥರ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇಬ್ಬರು ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಉಂಟು ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. So we should not approach sadhus or spiritual persons for some material purpose. तो यह कथा से यह शिक्षा लेना चाहिए कि हम लोग को साधु के पास कभी भी भौतिक चीज़ों के लिए नहीं जाना चाहिए. ನಾವು ಈ ಕಥೆಯಿಂದ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಭೌತಿಕವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾಧುಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಬಾರದು. So to finish the purport here by Srila Prabhupada, he, Shukadeva Goswami, was recognized when he spoke on the subject of Bhagavatam, and he never attempted jugglery like a magician.
उन्होंने कभी जादूगर जैसी जादूगरी दिखाने का प्रयास नहीं किया. ಅವರು ಭಾಗವತವನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು. ಸುಖಮುನಿಗಳು ಎಂದೂ ಮಂತ್ರವಾದಿಯಂತೆ ಕಣ್ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. Outwardly, he appeared to be a retarded, dumb madman, but in fact, he was the most elevated, transcendental personality. बाहर से वे जड़, गूंगे, पागल व्यक्ति जैसे प्रतीत हो रहे थे, लेकिन वास्तव में वे महान दिव्य रूप से उच्च पुरुष थे. So what is, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅವರು ಮನೋವಿಕಲರಂತೆ, ಮೂಕರಂತೆ, ಹುಚ್ಚರಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಿಜವಾಗಿ ಅವರು ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ದಿವ್ಯ ಪುರುಷರಾಗಿದ್ದರು. so what is the most important activity when we come to Bhagavatam class? तो सबसे महत्वपूर्ण चीज, सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है जब हम लोग श्रीमद् भागवतम कक्षा में आते हैं? ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ಈ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ತುಂಬ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ವಿಷಯ ಏನು? क्या है बताओ? हाथ उठाओ करके महाराज इसको बोलेंगे, बोलने के लिए वही. ಯಾಕೆ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರೋದು ನಾವು? ಗೊತ್ತಾ? बोलो Narayan. बोलो महाराज जो पूछे. हाँ बोलो. भागवत कक्षा में क्या करना चाहिए? He's telling we should hear. Yes. How we should hear? कैसे सुनना चाहिए? Telling ध्यान से, it means proper concentration. Yes. Means we should hear with attention, not be turning right, turning left, looking back, looking sideways, scratching our feet, twisting our toes. This was things you are. Yeah, I have a full view here. You don't see all these things from the backside. We should have another camera this way. तो महाराज बोल रहे हैं कि हाँ, महाराज बोल रहे हैं कि आप लोग को यहाँ पर ध्यान से सुनना चाहिए भागवत कक्षा में, ना कि अपना कोई पैर खुजला रहा है, कोई माथा खुजला रहा है, कोई उन्हें देख रहा है, कोई उन्हें देख रहा है, कोई बात कर रहा है इसके जैसा. ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಧ್ಯಾನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆ ಭಾಗವತನ ಕೇಳಬೇಕೇ ವಿನಃ ಆಚೆ ನೋಡೋದು, ಈಚೆ ನೋಡೋದು, ಕಾಲು ಗಿಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ತಲೆ ಗಿಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು. I'm beginning to know who has a scratch on which foot, right foot, left foot. महाराज बोले ना आपको कि ध्यान से सुन. Telling like some insect is coming. Yeah, insect come every Bhagavatam class for him. So there's very important instruction here that we cannot judge or should not judge someone by the external appearance, as in the case of Shukadeva Goswami, who appeared like a mad person. Same story, they know the story of Dharbarat, maybe not. Dharbarat, I don't think all, some of them would know. maybe, yeah. All of them. Okay. There are other examples in the Shastra, and so hearing, we should judge and understand someone when he is speaking in relation to Krishna, Krishna consciousness. तो हमें आज ये श्लोक से यह शिक्षा ग्रहण करना चाहिए कि हमें कोई भी साधु को उसका बाहरी रूप, वो क्या पहना है नहीं पहना है, उससे कभी भी उसको पहचान नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उनसे जब वो कृष्ण के बारे में कथा करें तब उनसे ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए. ನಾವು ಸಾಧುಗಳ ಹೊರಗಿನ ವೇಷವನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರನ್ನು ಆ ರೀತಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಅವರ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣನ ಕಥೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಅವ್ರ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Yes.
So do we have any questions on our verse for today? किसी को कोई प्रश्न है? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟಾ? प्रभु जी आप लोग को महाराज sometimes like you were mentioning for like we go in our some kind of tirth places, holy places. Yeah, holy tirtha. So we should search out for sadhus and we should hear with them. So sometimes we find like sadhus who are not totally according to our sampradayas. Then how to like? Yes. Okay. So the question is, when we go to some holy place, it is recommended, as we are hearing, to seek out sadhus, and usually in holy places sadhus live. But very often they may not be Vaishnava sadhus, so then what to do? You can translate. ಪ್ರಭುಜಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವೈಷ್ಣವರು ಸಿಗದೇ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಎಂತ ಮಾಡೋದಂತ? We should give respect to, especially if someone is born in some holy place, that is a sign of special birth. But we should be cautious to hear. We should be selective, and we should be hearing only from those who are representing Guru Parampara. तो मैंने यह प्रश्न पूछा था कि हम लोग कभी जैसे कि धाम जाते हैं, तीर्थ यात्रा में जाते हैं, जैसे मायापुर और हम लोग वृंदावन, तो वहाँ पे बताया हुआ था कि हम लोग को साधु से सुनना चाहिए जा करके। लेकिन महाराज ने, मैंने प्रश्न पूछा था कि हमें सबसे सुनना चाहिए क्या? तो महाराज ने उत्तर दिया कि सबसे नहीं, हमें ऐसा जो साधु है जो प्रामाणिक परंपरा में, चैतन्य महाप्रभु के या फिर वैष्णव संप्रदाय में जो प्रामाणिक परंपरा में आते हैं उनसे ही सुनना चाहिए, ना कि किसी भी साधु से। Yes. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಗುಲ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವೈಷ್ಣವರನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರಿಂದ ಕೇಳಬೇಕು. ಆ ವೈಷ್ಣವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಾಗಿರಬೇಕು. Actual definition of sadhu is one who is actually self-realized in terms of understanding the conclusion of Shastra. He is actually sadhu. Sadhu means self-realized person. तो साधु का अर्थ यह है कि उसे आत्म साक्षात्कार पूर्ण रूप से हो। ಸಾಧು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗಿದೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ಸಾಧು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. In the early days when devotees would go to Vrindavan or to Govardhan, foreign devotees, mostly it was devotees from outside of India, because Prabhupada's first disciples were made from foreign countries. Prabhupada would have to guard them, to warn them not to closely associate with, for example, Babajis, who were not known as being in the proper Guru Parampara. There are many people in different holy places who take advantage of that holy place, or who may have different philosophy that is not according to Shastra. So although we give respect to all living entities, we should be selective as to from whom we hear katha. It should be Krishna katha from those who are representing bona fide Guru Parampara.
शुरुआत में जब प्रभुपाद विदेशों में प्रचार किए थे सबसे पहले, तभी बहुत शिष्य बने थे, तो वो लोग आते थे ऐसा वृंदावन और मायापुर में घूमने के लिए और भगवान का दर्शन लेने के लिए। तो प्रभुपाद को उनको पहले से बताना पड़ता था कि कृपया करके आप लोग किसी भी ऐसे साधु जो कि ऐसी बाबा जी हैं और प्रामाणिक गुरु परंपरा में नहीं हैं, उनसे जाकर के ज़्यादा वार्तालाप ना करें और उनको सुने नहीं, उनका संग ना करें, जिससे कि वो आपको आपकी बुद्धि को भ्रमित कर दें। तो उन्हीं से सुने जो कि प्रामाणिक कृष्ण के बारे में बताएं, प्रामाणिक गुरु परंपरा से। ಪ್ರಭುಪಾದರು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿಯ ಅಮೆರಿಕನ್ ಭಕ್ತರು ಬೃಂದಾವನ ಮಹಾಪುರಕ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆವಾಗ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನೀವು ಬೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಬಾಜಿ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಜನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಸಾಧುಗಳು ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಯಾವುದು ವಾರ್ತಾಲಾಪ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅವರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ರೀತಿಗೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾರು ಸರಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. For example, it is not uncommon in Vrindavan to see Babajis smoking their bidi. If we were to see any ISKCON devotee smoking cigarette, we immediately would say, this nonsense. So, real sadhu, they must also, here it is stressed by hearing, by speaking, but also by their activities we can understand. तो हम लोग वृंदावन में बहुत सारे ऐसे साधु बाबा जी लोग को देखेंगे जो कि बाबा जी का कपड़ा पहने हुए हैं और बीड़ी फूक रहे हैं। तो हम लोग को यहाँ पे बताया हुआ है शास्त्र में, श्लोक में, कि हम लोग को बाबा यानी कि साधु से सुनना चाहिए और उनसे लेकिन उनके कर्मों को भी देखना चाहिए, वो क्या कर रहे हैं, उसके बाद उनको पहचानना चाहिए, बाद में उनसे सुनना चाहिए. ನಾವು ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾಜಿ ವೇಷ ಹಾಕ್ಕೊಂಡವರು ಬೀಡಿ ಸೇರ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಹರೇಕೃಷ್ಣದವರು ನೋಡಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇವೆ. I am not saying that all the Babajis in Vrindavan smoke bidis, but some of them definitely do. महाराज यह नहीं कह रहे हैं कि जितने भी कोई भी बाबा जी दिखे आप लोग को तो सब बीड़ी फूकने वाला बाबा ही हैं, आप समझ जाएं. आप लोग उसमें भी कुछ ऐसे भी अच्छे भी हैं, लेकिन आप लोग उनका सम्मान करें, उनसे संग ना करें ज़्यादा. महाराज ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಬಾಬಾಜಿಯವರು ಕೂಡ ಬೀಡಿ ಸೇದುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. In one of the purports in the Bhagavatam, Srila Prabhupada writes that if someone is a teacher and smoking cigarette, he is a cheater, not a teacher. तो भागवतम के एक तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखे हैं कि अगर कोई एक शिक्षक है और वो बीड़ी सिगरेट कुछ भी पीता है तो वो शिक्षक नहीं है, बल्कि वो एक धोखेबाज आदमी है. ಪ್ರಭುಪಾದ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೊಂದು ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕನಾದವ ಸಿಗರೇಟ್ ಅಥವಾ ಬೀಡಿ ಸೇದಿದ್ರೆ ಅವ ಶಿಕ್ಷಕನಲ್ಲ, ಅವ ಶಿಕ್ಷಕ ಆಹಾರನಾದವನಂತ. Yes. Yes. Babaji Guru Maharaj. Babaji. Which stage Guru Maharaj that one? Huh? Babaji saying no, Babaji. He is asking that how that like we have sannyasi, we have like a grihast, brahmachari, grihast, vanprasth, sannyasi. So that Babaji stage is some kind, what kind of stage that he wants to know? Babaji stage is above sannyasi. Above sannyasi. But they are very. Just like, Jagannath Babaji, that's not like yeah, our Vaishnava Babajis, there's some nice stories in the Chaitanya Charitamrita also. Yes, Babaji's stage is very, those are actually Babajis, they're completely renounced and
Generally, Babajis, they will be at one place. They are known as actual Babajis, as Paramahamsas, like in our Guru Parampara. Gokishore Das Babaji Maharaj, Jagannath Das Babaji Maharaj, like that. तो प्रभु जी प्रश्न पूछे कि जैसे हम लोग में होता है 4 स्तर होता है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। तो सन्यासी समाज के एक तरह से सबको शिक्षा देने वाले होते हैं। तो प्रभु जी पूछ रहे थे कि बाबा जी का स्तर क्या होता है। तब महाराज उत्तर दिए हैं कि बाबा जी सन्यासी से भी ऊपर होते हैं। और वो बोले कि बाबा जी जैसे हमारे संप्रदाय में, हमारे जो गुरु परंपरा में आप लोग देखते होंगे, श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, वो एक बाबा जी थे। श्रीला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, वो बाबा जी थे। तो वो सन्यासी से भी ऊपर है। Yes. ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ, ಬಾಬಾಜಿಯವರ ಸ್ತರ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಹಾರಾಜ್ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಬಾಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸನ್ಯಾಸಿಗಿಂತ ಮೇಲೆ ನಿಜವಾದ ಬಾಬಾಜಿಯವರು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಾಬಾಜಿಯವರು ಬರ್ತಾರೆ. ಜಗನ್ನಾಥ ದಾಸ್ ಬಾಬಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್, ಗೌರ ಕಿಶೋರ್ ದಾಸ್ ಬಾಬಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್, ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದಿಂದ ಬಂದವರು. But it is so rare, as you mentioned, it is so rare that within our ISKCON society, except for that one example I gave the other day, Prabhupada never gave Babaji dress. तो बाबा जी बहुत 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 बिरले होते हैं। वो ऐसा आपको सामान्यतः हर जगह नहीं दिखेंगे। और इसीलिए प्रभुपाद जी ने केवल एक ही अपने शिष्य को वो बाबा जी का कपड़ा दिया, और वो भी वापस कुछ दिनों में चले गए थे अपने घर. ಬಾಬಾಜಿಯವರು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಾಬಾಜಿಯ ಒಂದು ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ವಾಪಸ್ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದು. Yeah. And I believe Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur forbade and did not encourage, to my knowledge, did not give Babaji dress to any of his followers. और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, उन्होंने किसी भी अपने शिष्य को बाबा जी का भेष नहीं दिया, ना दीक्षा दिया। और उन्होंने वस्तुतः अभी किसी को भी उसके लिए उत्साहित नहीं किया, उस चीज़ के लिए. ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಬಾಬಾಜಿ ಒಂದು ದೀಕ್ಷೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. Okay. जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समस्त गौर भक्त वृंद की गौर प्रेमानंदे. So who wants to become Babaji? महाराज पूछ रहे हैं कौन बाबा जी बनना चाहता है? नहीं बाबाजी बन रहा है. कौन बनेगा बाबा जी? Who wants to become sannyasi? कौन सन्यासी बनना चाहता है? Now you can raise your hand. ಇಲ್ಲ ಗೃಹಸ್ಥನಕ್ಕೆ परम पूज्य भक्ति राघव स्वामी महाराज की जय. बांध दिए लोग, देखिए प्रभु जी बांध दिए. ये लोग के ना आगे बिठाने This is not a good पीछे बैठ के मस्ती word. करते रहते हैं. वो आगे वाला भी मत करेगा, तो उसको बैठाएगा तो मत करेगा. तो आपका मौका मिला कुछ सीखने के लिए, सब सीख ध्यान से सीखो. हम लोग को ये मिला नहीं है, हम लोग अभी पछता रहे. तुम्हारा उम्र में हम लोग को मिला नहीं है ऐसा सुनने के लिए. हम लोग कभी नहीं मिला बल्कि रो रहा है. इसीलिए अच्छा ध्यानपूर्वक महाराज जो बोलते हैं ना सुनो, समझा? हाँ अभी सुना, निकाल दिया दूसरा. बूढ़ा हो जाएगा तो पता लगेगा कि हाँ प्रसाद नहीं मिलेगा. उस टाइम क्यों नहीं ध्यान दिया? प्रसाद तुम लोग ध्यान से सुनता नहीं. Okay. कौन बांधे? Hare Krishna. हरे कृष्ण. Jai. Hare Bol. हरे बोल. Jai.
हरे कृष्णा हरि बोल हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण